Is there someone with query? Successful in his devotional service and leaves this body, does he have to take birth in another time in material universe where Krishna has his pastime, somewhere in other universe, or does he go straight to the spiritual world to Goloka Vrindavan? You don't repeat after. When a devotee is successful in his devotional service, gets the जब एक भगत जो है अपने इस भक्ति के पथ पर सफल होता है, does he go straight to Goloka Vrindavan? तो इस सफलता के बाद वो सीधा गोलोक वृंदावन जाता है, or does he have to take a birth in another material universe? या उसका जन्म फिर एक अलग प्रकार के भौतिक जगत में होता है. Where Krishna has his pastimes in order to get तो his उस भौतिक जगत में क्या भगवान की लीलाएं भी हो चुकी होती हैं, भगवान का कोई संस्मरण वहाँ रहता है, भगवान की लीला उस जगह पर होती है. in order to get his spiritual identity, like who is his father, who is his mother, and which family he comes from, and so on. This devotee. Yes, in terms of the lila. और उस समय उस लीला में उसका क्या स्थान है, कि वो कहाँ से आया है, कौन उसके माता पिता हैं. After being successful in this devotional life, so does the devotee goes directly to Golok Vrindavan, or he goes another material world? And if he goes in another material world, so this another material world is connected with the pastime of Radha and Krishna, and in that place, what his existence means, from where he came, who is his parents, and what is his role. पूर्ण कर्म हो जाने की बात ही जा सकती है. It depends on the karma of a devotee. After fulfilling each and everything, a devotee can go. By doing practice, it is possible that he can have darshan of Radharani. लेकिन भक्त के अंदर कोई आकांक्षा उत्पन्न हो जाता है. But in between, it happens sometimes that some desire evoke in the heart of devotee. उसको पूरा करने के लिए उनको रहना पड़ता है. And the devotee is still there until he doesn't fulfill this desire. राधा रानी के दर्शन करना बहुत कठिन काम है. Having darshan of Radharani is not a big thing. लेकिन कर्म फल से छुटकारा पाना ये बहुत कठिन काम. But to get rid of the result of your previous karma is very difficult. हमारी मन इतना चंचल है. The mind is so disturbed. कभी कहीं भक्ति है, कभी कहीं.
It is running all the time, moving here and there. गीता में है जो भ्रष्ट व्यक्ति It is mentioned in Gita, Srimad Bhagavad Gita, Yog Brashta means misguided from his spiritual path. तपस्या किया, राधा रानी दर्शन भी किया, After doing his sadhan, austerity, bhajan, he had darshan of Radharani. फिर मन में एक अंकुर निकाला है, But after happening all this, then one thing just germinated inside. अरे ये सब गाड़ी में घूमती है, ये कैसा सूट है, बत्ती पे ऐसी पे सोती है, इसको तो हम अनुभव किया ही नहीं। What type of this different kind of facilities, comfortability, how people are traveling in the car, and how nice bed in their house. So I didn't use all these type of things. कोई प्लेन में घूमती है, Some are traveling by airplane. हजार दास जाति किसी में घूमती है, Many servants are there around them. फिर नया अंकुर निकाला है। So this type of germination, ये नया अंकुर अब पेड़ हो जाएगा, now फलीभूत होगा, after germinating, it will become a small plant. From this small plant, it will turn into a big tree. इसको फल को पूरा करने के लिए, खाने के लिए Yes. इसको फिर आना पड़ता है। Means desire came. Now this desire started with smaller, then will grow a little bigger, and then will come in its biggest form. Then, if I'm enjoying the fruit of this tree, then again, as a result of this karma, I have to come back. इसलिए साधक में दो भाग किया गया है, That's why there are two types of sadhakas. नित्य सिद्ध, One is Nitya Siddha, एक साधन सिद्ध। another one is Sadhana Siddha. नित्य सिद्ध होती है जो लोग वृंदावन से मत में भेज दिया जाता है। Nitya Siddhas are those who have been sent from Golok Vrindavan on this earth. और जो यहाँ साधन करने की बात ऐसा कोई वासना जाग जाता है, उसको साधन सिद्ध कहा जाता And sadhan siddhas are those who actually who are on the path on their bhajan and sadhana. And while doing their bhajan and sadhana in between, they are misguided and they desire evoke in their heart. है कि मत में On this earth, जन्म लेने के साथ साथ माया उसको जगड़ लेती है। just after taking birth, the Maya takes the jiva in her lap. इसलिए कि उस याद में ही They just delete all previous memories. इसलिए जन्म में क्या थे और What he was in previous life यहाँ क्यों आया, and why he came again, उसको क्या कर्तव्य है, what he did. सब भूल जाए। Everything is
nicely related. इससे छुटकारा पाने के लिए निष्काम होके जब भजन करते हैं, If someone wants to get rid of this Maya, it happens with them, those who are doing unconditional devotional service, unconditional bhajan in their sadhana. निष्काम होके जो भजन करेगा वही ये रास्ता से बच सकते हैं। They will be successful to save themselves from the path, from the trap of Maya. भजन करते करते कोई भी वासना जाग जाएगा, फिर उस वासना उसको कब तक मत्त भूमि में घुमाएगा कोई निश्चित नहीं। So while doing bhajan and sadhana, we're just starting a small, very tiny type of any fatal desire related with this material world comes, then this desire, how long will disturb to devotee? It is very difficult to say. गीता में है राजा में हम है, वृक्ष में पीपल वृक्ष हम है। Krishna is saying in Srimad Bhagavad Gita that among the king, I am the greatest king, and among the greatest tree, I am the one of the greatest tree called people, Aswat. ऐसे पशु में भी है, वृक्ष में भी है, स्थावर जंगल में बहुत सारे भगवान In each and everything, he explained that he is there. ईश्वर में आने की बाद, राजा होने की बाद, हम अर्थ काम में अगर वो भक्त डूब जाए और अपना कर्म भूल जाए, And after becoming a king, if a devotee just indulge in all different kind of desire related with artha and karma, and forget his actual duty, फिर उसका और कई बार के जन्म लेना पड़ेगा, ये नहीं कहा जा सकता। so by happening all this, how many times he has to come again? It is very difficult to say. ये बाबा एक दिन हमको कह रहे थे, One sadhu, में बातचीत कर रहे थे, Shababa was talking with one sadhu, one Baba. They were talking to each other, and he was saying to him, बोले महाप्रभु जब अवतार हुए थे उस टाइम भी हम थे, he was saying that when Mahaprabhu appeared, I was also there. उस टाइम उनके साथ हमने कीर्तन किए, I did kirtan with him that time. नाम प्रचार किए, I went for the prachar to distribute this name with him. लेकिन हमको महाप्रभु ने नहीं ले लिया साथ। But Mahaprabhu didn't accept me. He didn't took me with him. फिर भौतिक सुख की Right. आकांक्षा जाती है, Why? A little desire came of this material world. भगवान सुख कहती है, सुख ये दोनों भोग पूरा जब तक नहीं होती, God saying himself that this sukh means this happiness and the dukh, this sorrowness. Both karma, the karma related with these both things, until a person doesn't taste the results of these karma, वो भगवान की सान्निध्य लाभ करने की योग्यता नहीं है। until he doesn't have ability to go near to God.
भगवान के साथ में रहने की बात भी उसको फिर दोबारा जरूरी है. And even is living with God, he has to take birth again. थोड़ी सी कामना की वासना की Just is because of little tiny desire. इसलिए बिल्कुल निष्काम होकर केवल जो राधा रानी की सान्निध्य संकल्प करके जो भजन करेगा वही जा सकती है और नहीं जा सकती. Totally becoming totally detached and unconditionally who will do bhajan. He can be able to reach near Radharani. शुरू से लेकर जन्म से लेकर अंत तक मृत्यु पर्यंत Since the time he took birth until the end of his life, पूरा जीवन whole life, काम भाव से सेवा करना पड़ेगा. if he will do the service unconditionally, चाहे जो भक्त व्यक्ति हो चाहे साधक हो doesn't matter is yog bhrashta or sadhak, सबके लिए एक ही विचार है. only one rule for them, both of them. एक खाली भक्त है. One sir? एक भक्त की दृष्टांत है. One devotee example is given. ये कभी कभी भागवत में कोई देता है. So during Bhagavad preaching, some Bhagavad preacher also give this example. He said, और ऐसा स्वाभाविक महात्मा लोग भी देती है. इसके दृष्टांत सुनाती है. and commonly some sadhus also say these things. माँ काली की पूजा में बकरा के बलिदान. Means in the tradition among Kali devotees, they have one sacrifice, that is sacrifice one goat, male goat. ऐसा करके 108 बकरा को बलि देने से उसको बहुत पुण्य हो जाता है. When sacrificing this male goat, when this number reaches of sacrifice of this male goat 108, then after this sacrifice of male goat, this devotee of Kali get a little power. माँ काली बहुत प्रसन्न हो जाता है इसके दर्शन देखने. जो And Kali is very happy and she give darshan. वही हो जाता है. सिद्धि हो जाता है. This is kind of mystic power come to this person. भौतिक सिद्धि जिसको कहा जाता है. This material expertness he has. एक साधु आया One sadhu came, जो काली पूजा करती है उसको शायद एक हुआ. he met this person who was Kali devotee, Baba. बोले देखो तुम जो हर बार काली की पूजा करते हो और ये जीव हत्या करते हो जिसमें तुम्हारी महापाप होगा. When Baba this came, that he said that whatever you are doing while doing your this Kali puja, you are doing your this killing of one jiva. This will be it's all collections of your sinful activities. देखो तुमने जितना बकरा को बलि दिया ना That as many male goat you killed for sacrifice, ये सारी बकरा स्वर्ग में तुम्हारे लिए खड़ी हो जाती. all these male goat reach to the heaven and they are waiting there for you. देखो स्वर्ग की तरफ See, look at heaven. सब सिंह पहनाए के खड़ी है. तुमको भी मारेगा छोड़ेगा. And they are
completely standing, they will also not leave you. They will also definitely will kill you. तुम जब इस शरीर त्याग करोगे, स्वर्ग की तरफ जाओगे, After जब leaving, रास्ता में उन लोग तुमको पकड़ के मारे। and after leaving this body, when you will about to go to heaven, on the way in between going to heaven, they will catch you and they will kill you. महात्मा बहुत सिद्ध महात्मा था और उसको दर्शन कराया गया, सब खा लिया। So this sadhu was very bona fide. So he able to show him everything to this Kali devotee that you see. भय की मारे काफी Now he started shivering with fear. बोले एक जीव हत्या छोड़ दो, जीव हिंसा छोड़ दो। His Baba said to him that you leave this killing, this hinsa, this violence. भक्ति भाव से उनकी पूजा करो। ये सात्विक पूजा, तामसिक पूजा, राजसिक पूजा इसे छोड़ो। If you want to do worship of Kali, so do this sattvic worship of Kali. Leave the rajasic and tamasic. ये जो जीव हत्या है, ये तामसिक राजसिक में गिनती है। This type of killing or this type of violence, this comes under rajasic and tamasic type of puja. भौतिक सुख बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। So, material happiness or material pleasure one can achieve very quickly. और राधा रानी सान्निध्य लाभ देर में, But darshan or the going near to Radha Rani, it takes little time. इसलिए जीव चाहती है बहुत जल्दी हमारी काम हो जाए, हमारी जय जयकार हो जाए, हमारी संसार में नाम हो जाए। So this is the nature of jiva, human being, that he wants that whatever the work is to be done should be done very quickly. If my something work is left, and everywhere I should be very popular, and my glory should be chanted by people. ये सब संग बोल से प्राप्त हो जाता है। एक भौतिक वस्तु की तरफ मन चला जाता है, संग बोल को Because of the association, if someone's mind is going towards this material existence, it happens because of association. द्वारका में बैठ के भगवान भजन कर रहा है, रुक्मिणी में पंखा कर रहा है और In Dwarka, परस रहा है। Krishna is doing bhajan, means bhojan, is eating, and Rukmani is sitting just beside and she is swinging the fan. सब कुछ ले आके बैठे हैं सामने, The prasad, everything is ready. जो खत्म हो जाता है वही देता है थाली में। Krishna is eating, and whatever is finishing, Rukmani is bringing and putting in the plate. भगवान खाते खाते हंसते हैं। And while eating, Krishna laughs. भगवान क्या बात है? And Rukmani asks, Bhagwan, what's the matter? नहीं नहीं बस ऐसे है, Why you laughed? Krishna said, no, कोई बात like this, nothing big. नहीं भगवान, आपके हंसी में बहुत बड़ा रहस्य है। And Rukmani said, no. When you smile, it's a big secret. तो बताना ही पड़ेगा। You have to tell me. मैं देख रही हूँ ये सामने खींचा जा रहा है, You see this, are you able to see this one ant is going there? ये खींचा 21 बार इंद्र बन चुकी है। This ant became Indra 21 times. अब देखो Now you see, गुड़ की सुगंध से ये कैसा भाग रहा है, Just by- खींचा बन। just by the smell of jaggery,
is attracted towards that side. ये कर्म की गति है. This is the result of karma. छोटा सा वासना जग जाएगा, फिर जीत को कहाँ से कहाँ गिर जाएगा कोई The नहीं. tiny desire, where this desire will bring to jiva, it is very difficult to explain. राधा रानी भगवान को दर्शन पाना, देवता को दर्शन पाना बहुत बड़ी बात है. As I said, that having darshan of God is not a big thing. आप थोड़ी दिन कष्ट करके ब्रज में रह के अच्छा महात्मा की भजनानंद महात्मा की संग करिए, राधा रानी की कृपा हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा. So we stay in Braja, in little, means tolerating many things in Braja, having association with a nice, very bona fide sadhu. So after some time, you will be able to have darshan of Radharani. ये बहुत बड़ी बात है. This is not a big thing. बड़ी बात यही है The big thing is जो निष्काम होके भजन कर, that you doing your कोई bhajan संकल्प नहीं होना चाहिए, unconditionally. कोई चाहने की पाने की आकांक्षा You must not have any kind of desire. You must not have any kind of effort to achieving this type of desire. अगर हो गया तो फिर कितना जन्म घूमना पड़ेगा कोई नहीं. So because if some mistakes happens, if this type of desire comes, then how long, how many time, how many births will take, which is very difficult to say. ऐसा कोई संग गुण से ऐसा कोई कर्म बांध जाता है जे नरक में जाना पड़ता है, कुसुपुर में जाना पड़ता है. Sometimes it happens because of association, when some karma happens by jiva, that you need to go to hell. Hellish planet. देखो सीता की क्या हाल है. You can see the situation of this ant. कहाँ इन देवता की राजा था, बस कहाँ सीता बनी. Where he was the god of all demigods, and where he became one ant and running after the smell of this jaggery. ये है, ये बहुत कठिन रास्ता है. ये This is little difficult way. हर कदम कदम पे आपको खतरा है. One hand, it's a danger at each and every step. कब पैर फिसल जाएगा कोई निश्चित नहीं. When you will slip, it is very difficult to say. सब में से बांचने की एक ही उपाय है. To protect yourself, there is only one way. राधा रानी की शरणापन्न Surrender in the lotus feet of Srimati Radhi. पूर्ण भाव से Purna bhav, with full of your heart, means full of honesty. साधक लोग दृष्टांत देते हैं. Some sadhikas giving examples. बालक के साथ Same, become like a child, जैसे छोटा बालक like a small child, small. केवल माँ को ही पहचानते हैं और रोना ही आता है. और This baby, आता ही नहीं. this small baby only recognize mother, and you only know one thing, to cry. कोई भी गाली दे, कोई पूजा करे, उनको लिए कोई अंतर नहीं है. The baby doesn't have any effect if who is abusing and who is doing arati, who is doing puja.
छोटा बालक को कोई ले जाके टट्टी पी को सुला दे उसको गाली देगा क्या आपको? If you take one small baby and put this baby on somewhere where there is shit, this baby will not tell you anything. He will not abuse you. और उसी बालक को सोने की खाट पे ले जाके लेटा दे तो आशीर्वाद देगा। And if you bring this small baby on a golden bed, so this baby will not bless you. नहीं, No. उनके लिए तो सब बराबर है। The baby, everything, all places are same. तो साधक के लिए भी इस दौर को होना चाहिए। That's why the sadhakas, devotee should be also at this level. संसार की जितनी वस्तु है All this material existence, सब प्रकृति की बराबर है, all should be like non-useful shit. और उनको मानना भी चाहिए, देखना भी चाहिए ऐसे। And a sadhaka should consider this material existence like that, and he should see all these things like this. वही पूर्ण सरेंडर की कहा जाता है। This is the meaning of complete surrender. फिर भौतिक वस्तु की ऊपर उसकी आसक्ति है ही नहीं। Complete surrender means he has no any desire or attraction towards material existence. एक ही रास्ता है, एक ही पथ है, ये रास्ता इसमें This is the only one way. नहीं तो बहुत मुश्किल। Otherwise, it's difficult. मर्तभूमि से गोलोक वृंदावन जाना बहुत कठिन बात। From here to go Golok Vrindavan is quite difficult. राधा रानी की सेवा लाभ, उनका सान्निध्य लाभ बहुत कठिन। The benefit of Radharani service, the benefit to go near to her, it's quite difficult. इसमें ठाकुर जी की राधा रानी की दुख नहीं होती है क्या? जो उनकी भक्त ऐसा माया में फंस के पड़े रहती है। Radharani and Thakurji, Radharani and Krishna, do they feel that my devotee, do they feel pain that my devotee is in the trap of this Maya? राधा रानी की बहुत मन में दुख होता है। Definitely, both they feel very bad बहुत कष्ट होता है। by looking all this. Where is my devotee? When they see all, they are completely sad. They have pain. किसी की कर्म के ऊपर और किसी की नियम के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता, हस्तक्षेप नहीं करता। Nobody is interfere in anyone's whatever one is doing. ये मर्त भूमि ब्रह्मा की होती है। This earth is under control of Brahma. वो जो नियम कर दिया He fixed some rules and regulations. उसके ऊपर राधा रानी भी हाथ नहीं उठाए। So what the Brahmajis fixed the rules and regulations. Radharani will also not interfere in this. अगर राधा रानी उसके ऊपर हस्तक्षेप कर दिया तो फिर रह क्या जाएगा? If Radharani interfere what the rules and regulations Brahma established, then what will be the meaning to do that Brahma need to do all these things? ब्रह्मा को किसने भेजा? Who sent Brahma to do all this? कहाँ से आए हैं? From where he came? किसकी ऑर्डर से काम कर रहा है? By whose permission he is doing all this? He did all this. ये राधा रानी क्या कैसे कर रहा है? राधा रानी ने भेजा, Radharani sent उन्हीं की Brahmaji. अंश है।
Radharani sent Brahmaji. Brahmaji is working under the guidance, under the direction of Radharani, and is a part and partial of Radharani. उन्हीं की जो नियम बना हुआ है खुद कैसा तोड़ सकती है? So how Radharani can break these rules and regulations? जितनी नियम है भक्त भूमि का, इसका नियम राधा रानी ही बनाई है. All these rules, regulation, first Radharani created, she made all these rules and regulation, and thus transferring in the hand of Brahmaji. कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं. She made all the rules and fixed a person, the head of the department of different rules and regulations. ब्रह्मा की एक नियम है, नारायण की एक नियम है, शिव जी की एक नियम है. So Brahma has some special constitution, Shiva has a special constitution, Narayan has one constitution, राधा रानी जानती है Radharani is knowing. कि क्या जो एक बार हमारी नाम उच्चारण कर लिया मुंह से, वो भी ना को भी हमारी दासी बनेगा, ये निश्चित है. Radharani knows this, that whomsoever chanted my name once, definitely one day he or she will come to me under my service. एक बार लाख जन्म बार हो सकता है. Possibly million time of birth, 10 जन्म बाद भी हो सकता है. and also possible just after 10 birth. ये तो केवल भक्त की ऊपर निर्भर It करेगा depends on the devotee. कि वो कब जाना चाहे. One devotee wants to go. नहीं तो राधा रानी के दर्शन पाने की बात, राधा रानी के साथ घूमने की बात भी यहीं जाना पड़ेगा. Otherwise, after having darshan of Radharani, even after walking side by side with Radharani, it is very possible that one must be here. एक महात्मा हिंदू से सुना है, We listened something about with one Mahatma. बोले बुद्ध जो भगवान के अवतार हुआ था, बुद्ध धर्म की, The Gautam Buddha, the Buddha appeared. उस टाइम की बात भी वो बता सकते. बोले उस टाइम हम उनके साथ घुमा है, This Baba said to KESHAV Baba धर्म प्रचार किए. that I was with Gautam Buddha, and I also do this dharma prachar. I also helped in the expansion of this religion. वो फिर अभी जन्म लिए हैं, इस जन्म में भी राधा रानी की दर्शन पाया है. And he took birth again in this Kali Yuga, this recently, and he has got the darshan of Radharani also. कितना जन्म उसको लेना पड़ा था. So how many times he came? तो साक्ष्य प्रमाण है, So this examples are there, means evidences are there, सामने है. ये proofs are there. कोई शास्त्र ग्रंथ देखने की जरूरत है. No need to see anywhere, to see in any scripture or any book. जब भगवान को निष्काम होकर भजन करता है और राधा रानी जब दर्शन देती है, उसके कितना जन्म पीछे जो किया सब दिखाई देता है. So a person who did unconditional bhajan of Radharani, he is able to see all this, his past life, long past life, that what he did. वो जो भी बता सकता है यार, हमने पिछले कितना जन्म से घूम रहे हैं, किस कौन अवतार के साथ हम घुमा है, किसके दर्शन पाए हैं, सब वो बता सकते हैं. This unconditional sadhakas can say all this, that to whom he be with, but how many, in the past, how many life, where he been, to whom he been, what he did.
Everything he is able to say. अभी अभी की बात है, गोविंद कुंड है ना, अनर गोविंद कुंड, In Govardhan, Anya or when Govind Kund is there, उसमें it's a very recent incident. एक सिद्ध बाबा थे. One Siddha Baba was there. वो बाबा एक दिन सत्संग करते करते कहानी शुरू कर दिया अपना कहानी. And this Baba, while doing Harikatha, just told his story. बोले हम तो खुद अपना 7 जन्म की बात करते थे. So I myself can tell about my 7 birth. हम 7 जन्म यही आए थे तपस्या करते. So the last 7 life, I'm coming here at Govinda Kund and doing tapasya, doing bhajan. मैं भजन करता हूँ और मर जाता हूँ, फिर बंगला में जाके जन्म लेता हूँ, फिर यही आ जाता हूँ. So right now I'm doing bhajan here, and after dying I'm going again, taking birth in Bengal, and just from Bengal I'm coming again here at Govinda Kund doing bhajan, and again dying, going back to Bengal, taking birth over there, again coming Vrindavan doing bhajan at Govinda Kund. तो खुद बोला है अपना मुझ. This Baba said himself. ऐसा है ये महत्वपूर्ण नियम. जब तक निष्काम वृत्ति से भजन नहीं किया जाएगा, कर्म नहीं किया जाएगा, जब तक राधा रानी सान्निध्य लाभ होना बहुत मुश्किल है. So this unconditional bhajan, unconditional seva, someone is not doing, it is very difficult. ये सिद्ध स्तर की महात्मा बहुत ढूंढ रहा है So this इस संसार में. highest level type of many sadhus and mahatmas are still there on this earth. ऐसा बहुत महात्मा, जितनी बहुत बड़ा बड़ा छोटा भक्त है, बहुत बड़ा बड़ा तेजी दिखाई देती है, ये सब सिद्ध स्तर की महात्मा है. राधा रानी की दर्शन इनको हो चुकी है, लेकिन Whosoever we see that they are very shining type and very smart and bona fide type of sadhus and mahatmas are there. They all are not ordinary, definitely, and they have had darshan of Radharani. But निष्काम भक्ति नहीं है. this unconditional bhakti, कहीं ना कहीं छिपा हुआ भक्ति में कहीं ना कहीं अपना कामना रह गया है, इसलिए उसको फिर आना ही पड़ा. so after time and again, if they are coming, they are highly bona fide, means highest level sadhus and mahatmas are there. But while doing their sadhana, somewhere a very tiny part of desire came. That's why they are again here. तपस्या करते करते राधा रानी की दर्शन दिया, जाने की टाइम भी हो गया. While doing sadhana, Radharani also came and gave her darshan. Now it's time to leave the body. और हमने तो ऐसा कर्म किया ही नहीं है. हमें ऐसा कर्म करना चाहिए था जो क्या हजार शिष्य करना, बहुत बड़ा बड़ा मठ Now at the time बनाना of है. leaving the body, after having even darshan of Radharani, now after leaving the time of the leaving the body, one small tiny desire came. Oh, there is something missing that I didn't do. I should do. हमारा जय जयकार हो सब जगह हो. I didn't make so many disciples that can sing my glory when I'm not there. क्योंकि भक्ति की रास्ता ही है, This is the path of devotion. शिष्य करना, मठ मंदिर बनाना It's all the part of bhakti marga, making अलग नहीं है. temple, making disciples. These are not apart from the path of devotion. बस राधा रानी कह देगा ठीक है बेटा,
अगली जन्म ये सब कर लेना फिर Then after living the body of Radharani will say, okay, the next life you will do this, come. This time you come, but next life you have to come to do all this. फिर भेज देगा जाओ तुम्हारी Then she will send back again, go. भजन पूरा नहीं है भजन पूरा कर You just left your bhajan in between, you just deviated yourself during bhajan. Now again you go, do bhajan. फिर आके वो तपस्या शुरू कर देगा Then you start from there, you will start again doing bhajan. क्यों पिछली जन्म की समझता है ना उनकी You will start bhajan definitely. उनको सिखाने के लिए कोई जरूरत नहीं No need to teach anything. तो And जन्म करके this person will not take long time to start bhajan. So just after the taking birth, soon he will start his bhajan. Because the previous samskara is there. वो जन्म से ही उसको वही संस्कार नीति जन्म So at the time of birth, he has this samskara. And because of this samskara, after taking birth, after a short time, he just starts his bhajan. He is busy in his sadhana. जैसे ही संसार में आएगा उसी टाइम से वो भक्ति शुरू कर देगा Just after coming in this world, he will start bhakti. उसको सीखने की कोई जरूरत नहीं So because of the previous life samskara, you no need to learn a lot. ये समाज के लिए सीखने गुरु करना पड़ता है उसको So because of this society, that guru is important in the life. Because of this देखा जाता है tradition, because of this after tradition, he makes guru. Although he doesn't need any guru. बहुत इस ब्रजमंडल में भी है थोड़ी उम्र में उसकी बहुत नाम हो जाता है In Braja, शिष्ट हो जाती है even in Braja, you can see many in very little age, in young age, he is very famous, he has so many disciples, he is very popular. थोड़ा दिन तपस्या किया है ज्यादा कठोर तपस्या किया ही नहीं Means after taking birth, he didn't do much, he just did a little bit and then he reached at high level. उनकी करने की कोई जरूरत नहीं He doesn't need to do anything more तो करके ही है क्या Because- हुआ है because he did already. तो करके आया है जिससे केवल काय बदल हुआ है He just changed the body, but the previous samskara is there that he did bhajan. उनको ऐसे ही प्रभाव चल जाती है पर So, शिष्य करने He शुरू become famous everywhere. बहुत बड़ा बड़ा मठ मंदिर बना के करते थे Yes, he is very famous and he makes so many different temples. Many disciples are there. इसके लिए वो निंदनीय नहीं For this, one cannot do his criticize. उसको निंदा जो करेगा उसको नुकसान हो जाएगा And if someone criticize of this type of personality, तो राधा रानी प्रिय हो चुकी है and if someone criticizing this type of sadhu mahatma, then it's not good for this person because he is already under the shelter of Srimati Radhika. और वो खराब कर्म भी नहीं कर रहा है राधा रानी पूजा कर रहा है और भक्त जीव को और भक्ति की रास्ता में ले आया है And this type of Mahatma is also not bad because he is pulling many people towards Radharani and is doing whatever he is doing for Radharani. यही है इसकी मूल उद्देश्य और यही है मूल बात क्या निष्काम जब तक नहीं होगा जब तक राधा रानी की सान्निध्य So the main thing सेवा लाभ only is this. भक्तमान कहते हैं Main thing is only this, that this unconditional bhajan. साधक बन सकते हैं इसमें कोई संदेह नहीं You can become sadhak while doing this. भक्ति में बहुत स्तर है There's different kind of level on the path of devotion. जब तक शुद्ध भक्ति उत्पन्न नहीं होगा जब तक राधा रानी की किंकरी नहीं बन सकती
Until this pure bhakti doesn't takes place, till then it is very difficult to become the servant of Srimati Radhika. बिल्कुल बच्चा जैसा ही सरल होना पड़ेगा. We have to become simple like a baby. जब तक बच्चा जैसा नहीं बनोगे, जब तक नहीं निकल सकते. Till our behavior is not like a baby. बेर जन्म लो और भजन करो और घूमो, खूब जय जय कर लो, अगर सम्मान प्रतिष्ठा लो. Take many times life, and people will chant your glory, will have many things, go here and there, move everywhere in the world, get the all prestige and the respect from the many people. एक मर्त्य भूमि है, कर्म भूमि कहा गया है. यहाँ कर्म करने से फल मिलेगा. This is Martya Bhumi, mortal place. After doing some karma, this type of karma, unconditional, then you will have something. ये मर्त्य भूमि में आने से मरना पड़ेगा और कर्म भी करना पड़ेगा. ये कर्म भूमि है. On this earth, after taking birth on this earth, one have to die, and they have to do karma also. सबको कर्म To all, करना पड़ेगा. all have to do. ऐसा कोई जीव नहीं है जो कर्म बिना करके बैठे. There is no any single jiva that without doing anything he can sit. ये मनुष्य नहीं है, सब जीव के लिए कहा जा रहा है. This is not only for human, it's actually for all living entities. पशु जो है वो पशु की कर्म जैसा होता है, वो ऐसे करती. Animal is doing how the animal is doing. तो उस स्तर की जितनी कर्म है वो करती है, करना पड़ता है. So after taking birth in animal, whatever the decided to do like an animal, they are doing. गैया की कर्म क्या है? देखो, सबको दूध देना है, बच्चा भी पैदा करना है, What is the karma खाना of है, the, सोना है, टट्टी करना. that giving milk to all, giving birth a baby, new baby all the time, doing toilet and taking rest and eating, that's it. उसको लिए उतना ही कर्म नियुक्त किया So गया. these are the karma, these are fixed for her. जिस तरह की पशु होगा उसी तरह की उसकी कर्म नियुक्त किया It गया. depends on the level, different type of karma, as per the type of animal. सब जीव कर्म करते All living entities are doing karma. हैं. सबसे श्रेष्ठ कौन होता है संसार में? Who is greatest? मनुष्य जन्म. It's human life. और सब बुद्धि है इसको. All knowledge, women have all knowledge. ऐसा कुछ नहीं रखा राधा रानी इनकी देने के लिए रखा. Radharani gave all type of power to women. सब कुछ दे दिया. Everything. और जीव तो नहीं दिया, केवल मनुष्य को दिया था. Not all living entities. Among all living entities, to human, Radharani gave everything. अच्छा बुरा Good, bad. कैसा करके अपना पैसा कमाना है, कैसे सुखी हो सकते हो, और दिमाग दिया है. Woman has all different type of tricks and in his mind that how to make money by doing good, by doing bad. जीव चाहे सीधी बात है, एक ही शब्द है. जीव चाहे एक ही जन्म में नरक में जा सकती है और एक ही जन्म में राधा रानी की किंकुरी बन सकती है. One thing is very clear and straight that in one life a jiva can go in the hell, and in the same life he can go to Radharani. इसलिए कहा गया है तथास्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश. मतलब भगवान की क्या शक्ति है, उसमें से तथास्थ शक्ति जीव पैदा हुआ. So different Shakti, different powers of Bhagwan. Among different powers of Bhagwan is the one, this Jiva is Tatastha Shakti.
आह्लादिनी शक्ति से राधा रानी को बनाया। आह्लादनी शक्ति है श्रीमती राधिका। ऐसा है, उनके अलग अलग शक्ति के द्वारा अलग अलग जीव को प्रकट किए। By different prakriti, by different nature, he created different jiva. तथागत शक्ति जीव है, जिधर मूर्ति उधर जा सकती, इसके लिए छूट है। Tatastha Shakti, Jiva means human. They are free, they have free will, they have free choice. They can go anywhere, they can do anything. तटस्थ उसकी कहा जाता है, ना पानी ना सूखा, बीच में जो जाएगा है वो वहाँ खड़ी है। Tatastha means it's not totally wet, not totally with water, and not completely dry. The place between this watery and dry. जिधर जाना चाहे जा सकते, So अपना कर्म के अनुसार। Jiva is in the center, so he can go anywhere. एक दिन गैया चराते चराते कन्हैया One day, Krishna was grazing cow, सखा के साथ बैठ के भोजन कर रहे थे। and sitting with all his friends, he was eating. सीधा सखा कहे, Sridama, one of his friends, is saying बोले भाई कन्हैया, to Krishna, तुम हमको एक बात आज तक नहीं बताई। so you didn't tell me one thing till the day. बोले क्या? Krishna asked, what? तुम तो हमारी प्रिय सखा हो, You are तुमसे my, हमारी कोई बात छिपा पड़े, you are my dear friend. I didn't hide anything. हर बात तुमसे खोल के कहते हैं। Everything is very open and clear to you. बोले नहीं, तुम छिपाए के रखा है हम लोग से। And Sridama said, no, you was hidden something. बोले बता कौन सी बात है? Then Krishna said, tell me, what's that? बोले ये जन्म लेना और मरना, Well, this is taking birth and dying. ये दो तुम हम लोग को नहीं किया है, नहीं सुनाया है। इसको कैसा है? These two things you didn't give us. That by our choice we can take birth and die. ये दोनों But क्रिया मंत्र जो है वो हम लोग को सिखाए। so please tell these two things to us. Give this mantra for these two things. Oh. बोले देख, And Krishna said, see, तुम हमारी प्रिय सखा हो, ये संसार में जितनी जीव है सबको हम सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं रखा। you are my dear friend. So whosoever is in this world, I gave everything to all. हमारे पास और कुछ नहीं रखा, केवल दो ही रखा है। I don't have anything else. I am just keeping these two. अगर दो ही भी अगर दे देंगे ना, हमको भगवान बोल के कोई नहीं मानेगा। If I will give these two things also to Jiva, then nobody will ask me from tomorrow. संसार में हमको कोई पूजा नहीं करेगा, कोई नहीं मानेगा। Nobody will come to my temple, nobody worship me, and nobody will listen me. इसीलिए ये दो ही चीज हमने अपना पास रखा। So these two things I am keeping with myself. And rest of other things I gave all to Jiva. सुख दुख वैभव यश जितनी है All सब कुछ दे दिया। Aishwarya, happiness, sadness. चाहे इंद्र बन जाए, Become Indra, no problem. कोई देवता बन जाए, Become some demigod. पूरा पावर दिया गया हुआ है। I gave all power by practicing and become Indra. और दिखते I gave all power to each and every single Jiva. केवल दो ही चीज रखी है, ये दो ही चीज। I'm just keeping these two small things. बोले देख, अगर तू मर जाए तो फिर हम किसको कैसा जिंदा करेंगे? Sridama कह रहे हैं ना? हाँ, Sridama is saying to Krishna, suppose if something happens with you, if you die, then how will make you alive again? एक बार हम लोग जहर की पानी पी के मर गए थे ना सब।
So one time it happened that while drinking this poisonous water, we all died one time. और एक बार आकाश हमको निकाल लिया था ना, सब मर गए थे हम लोग। And one time this Agasu swallow all of us. We all were died. और एक बार जंगल में हम लोग गैया चराते थे, अब चारों तरफ से आग लगा दिया, हम लोग सब मर गए। And one time we were raising cows in the jungle. And at that time the jungle caught fire and we were in the middle of this jungle. उस टाइम तो तू ही जिंदा किया था ना। And at that time you saved us, no? अगर तू मर जाएगा तो फिर हम लोग को क्या होगा? If you die, then what will happen with us? इसीलिए वो जिंदा होना और मरना ये दोनों मंत्र हम लोग को सिखा। Then Siddhama is saying that's why that we can do also with you something when you die. That's why you give these two things to us also. Give this mantra. बोले ये नहीं हो सकता। Then Siddhama said no. Krishna said this I cannot do. ये दो चीज हम नहीं देंगे, ये दो ही चीज रखा है These two things I am giving you, this I will not give. और सब दे दिए। And all other things I give. मनुष्य को ऐसा कोई चीज बाकी नहीं रखा भगवान देने की, ये चीज नहीं है, केवल दो ही रखी है बस। All other things he gave, there is nothing remains. Only these two things he is keeping. कोई को भी नहीं रखा। There is no scarcity, nothing is missing. चाहे एक दिन में पहुंच जाए राधा रानी के पास, चाहे करोड़ों जन्म में पहुंचे। So, if you like to reach, one day you can reach to Radharani. But if you like to, in millions different births, then you can reach. It depends on Jiva. ये कर्म की निर्भर है, Depends on the karma. ये भगवान के हाथ में नहीं है। एक को दे दिया, This is not in his hand. जीव को दे दिया। He gave to Jiva. तुम जितना दिन तुमको भोगने की इच्छा है भोगो। As long as you want to enjoy, go and enjoy. तुमको भोगते भोगते जब थक जाओगे, जब आ जाना हमारी पास। When you will get tired after a lot of enjoying that, now you will say that, oh, I am tired of this kind of enjoyment. Then you will come to me. ये भी निश्चित है क्या, एक दिन न एक दिन उनके पास जाना पड़ेगा। And this also, शांति मिलेगी। and one, this is completely definite that one time or after moving, enjoying a lot, one day we all have to go to him. And that will be the day that we will have peace. ये कर्म भूमि है, गृहस्थ की जो कर्म है वो गृहस्थ कर रहा है, जो साधु की कर्म है वो साधु कर रहा है। This is karma bhumi. Family life, those who are in family life, they are doing accordingly. And those who are on the path of ये सब the कर्म sadhu, में देखा they are doing accordingly. साधु भजन कर रहा है, ये भी कर्म है। Sadhu is doing bhajan, this is also karma. गृहस्थी धर्म आचरण कर रहा है, ये भी कर्म है। Family life, big person is doing his job, this is also karma. जो चोरी करता है वो भी कर्म है। One is thief who is stealing, this is also karma. जो जीव हत्या करते हैं वो भी कर्म है। And one is who is killing someone, he is also doing karma. लेकिन फल अलग अलग है। But the result of different karmas are different. साधु की कर्म की फल अलग होता है, चोर की कर्म की The फल result of अलग होती है, Sadhu's bhajan is different. जो गृहस्थी भक्ति है उसकी फल अलग होती है। Family life person's result is different. जो A thief who is stealing, जीव हत्या करती है his karma's result is different. Who is killing someone, his, according to his karma's फल भी results are अलग different. अलग ही मिलेगा। The सब results will be also different. इसमें कोई संदेह नहीं। There is no doubt. ये जीव के ऊपर निर्भर करेगा, तो जो कब जाना चाहती है राधा रानी के सामने, Depends on Jiva when he wants to do. जब तक निष्काम होके कर्म नहीं करेगा, जब तक वो हाथ चक्कर खाते रहेगा, पीते रहेगा। Until
once one is not doing unconditionally this sadhan bhajan, till then he will roam on the same place. He'll go and come back. जन्म मरने की बात कैसा करके जन्म लेगा, इसके लिए उसको सोचना नहीं पड़ेगा। हम कैसा करके फिर जन्म लेंगे? If someone is thinking that how I will take another birth, he no need to think over it. That after dying, the next birth will be what? No need to think on it. वो नियम करके रखा, So these rules and these laws are there. वो मशीन बना के रख दिया। जो जन्म लेगा वो मरेगा, और जो मरेगा वो जन्म लेगा। This is definite that one who will take birth will die, and the person who will die will take birth again. सब नियम किया हुआ है, All इसको laws, सोचने की कोई जरूरत नहीं। laws are established already. केवल सोचने की एक ही बात जरूरत है, You need to think only one thing, क्या राधा रानी की सान्निध्य लाभ कब होगा? that when we will reach near to Radharani, राधा रानी से यही प्रार्थना करिए, भक्ताई किया जाए तो अच्छा है। क्या हमारी मन को बिल्कुल सरल कर दो, जैसा बच्चा जैसा हो जाए। only we need to pray to और Radharani. तुम्हारी लिए केवल रोए बस। That only need to pray to Radharani, only that make us like a baby, make our mind like a baby, that we can cry only for you all the time. And by listening this crying, you come and take us in your lap. यही आशीर्वाद दे। So just give this kind of blessings. इसलिए जो बुद्धिमान भक्त हुआ ना, तो कोई भगवान से वर नहीं लिया। So wise devotee never asked anything, even God is coming and asking that what do you want. The wise devotee, they never asked anything. कोई भगवान तो बोलता ही है आके, क्या चाहिए बेटा? Bhagavan, he comes and asks what you want. जो कोई तपस्या कर्म करेगा फल देना पड़ेगा भगवान को। After doing sadhana and bhajan, and after doing this austerity, he has to come to give the result of all this. He's doing his sadhana. He will come and ask what you want. रावण जैसा चाहा ऐसे फल दे दिया उसको, खूब होगा। So Ravan wanted what he wanted, he got. And he enjoyed everything. कंस जैसा मांगा ऐसे ही होगा। The same thing Kamsa asked. वो भी तपस्या किया है, बिना तपस्या से नहीं मिलती है। Kamsa also did austerity. Ravana also did austerity. After तपस्या करना पड़ा। hard austerity, they got something. रावण को क्या 1000 वर्ष तपस्या करना पड़ा। Ravan did austerity till 1000 years. जो भी उनको इस स्तर में पहुंचा, And after that he reached on this level. हिरण्यकश्यप ये लोग भी कठोर तपस्या किए हैं। Hiranyakashipu, Hiranyaksh, they all did this very hard austerity. वो भी कर्म ही है ना, These are also karma. तपस्या भी कर्म है। Austerity is also karma. अब फल मांगने की तो उनकी ऊपर निर्भर करेगा, जैसा फल मांगेगा भगवान ऐसा फल दे देगा। ले लो It भोग लो। depends, after doing this lot of austerity, what they ask. Whatever they will ask, they will have to enjoy it. तो भक्ति की पर निर्भर करता है कि क्या फल चाहिए तुमको। It depends on devotee. लेकिन जो बुद्धिमान भक्त होती है वो भी भगवान से वर नहीं लेती है। But a wise devotee, they never ask anything when it comes to ask something. प्रहलाद जैसे ही प्रहलाद को कहा तुम वर मांगो, क्या मांगा प्रहलाद? Missing Bhagwan asked to Prahlad Maharaj, that ask you something, what you want. बोले अगर वर देना ही चाहते हो भगवान, ऐसा वरदान दो कि हमारी अंदर को भी वर लेने की इच्छा ही ना जन्म ले। Then Prahlad Maharaj said that if you want to really give me something, give me one thing. That never in my life this desire should come that I want to ask something. ऐसा वासना ही हमारे अंदर को भी जन्म ना हो। This desire should not evoke in my heart that I want something. राधा रानी से
हमको यही मानना चाहिए कि हमारी और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपको सान्निध्य लाभ चाहिए, आपको सेवा चाहिए बस। So the same thing we should do with Radharani. We don't want anything. Just we want to reach to you. We want to be with you. We want to become your king. बोलो राधा गोविंद महाराज महाराज की बोलो जय। साधु महाराज आज की जय सब भक्तों की जय, आनंद की जय। जय जय श्री श्री राम राम जय गौर हरि जय। केशव बाबा की जय, सच्चिदानंद प्रभु की जय। और धर्म की जय जयकार करके क्या होगा।